In this video we are going to discuss about the Ohm's law. So in 1827 a German physicist Georg Simon Ohm find the relationship between the potential difference and the current. ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ओम, आप देख रहे हैं फोटो, ये ओम वर्ड ही वहाँ से आया. मैक्सिमम साइंस के जितने भी लॉज होते हैं उनके नाम जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होता है उनके नाम से रेफर किए जाते हैं. तो ही इज द वन हु हैज फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट. So according to him, when physical conditions such as temperature remain constant in an electric circuit, then the current flowing through the conductor is directly proportional. ये important point है, ये याद रखने हैं. Current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor. ये important point है जो miss नहीं करने हैं. तो according to Ohm's law, when physical conditions such as temperature remain constant, the current flowing through the conductor, metallic conductor होगा, is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor. ठीक है, so we can say potential difference is directly proportional to the current, meaning if potential difference increases, current also increases. So whenever we remove the proportionality constant, there comes a constant. So V is equal to Ri, where R is known as the constant known as resistance. We can also write this relation like this: V upon R, V upon I is equal to constant, upon I is equal to the constant, and this constant is a constant of proportionality known as the resistance. And the important point, the necessary condition for the validity of the Ohm's law is that temperature remain constant. अभी जब हमने definition में discuss की थी, then also we have said that the temperature of the system remain constant. Constant का मतलब होता है same temperature रहेगा जब तक हमने पूरा V और I की वैल्यू को जितनी बार भी चेंज करें, temperature should remain constant. So next is, so in the NCERT this is the activity 12.1 by which we will prove the Ohm's law. ठीक है, so that case we require some of the requirement here. We require a battery, a nichrome wire of resistance R and length XY. ठीक है, एक वायर लिया हमने रेजिस्टेंस R का, उसके पैरेलल हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को अटैच किया एंड एमीटर अटैच किया इन सीरीज, प्लग की. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय चेंजिंग ईच टाइम द नंबर ऑफ बैटरी हेयर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल V एंड I, अब हम दो यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट देखेंगे कि what is the potential difference and what is the current in the circuit. ठीक है, hypothetical situation ले रहे हैं in order to verify that law. Now activity के different steps क्या हैं कि initially we connect the 3 cells and we find out the voltage in the voltmeter and the ammeter. ठीक है, तो first of all we are connecting the 3 cell and we are finding the reading for V and I. Then we remove one of the cell and using 2 cell we find out the amount of voltage and the current in the circuit. ठीक है, and in the third case we only use 1 cell and we find the voltage and the current in the circuit. So what we observe, when voltage is 2 volt then the current is a 1 ampere, and when voltage is 4 volt the current is a 2 ampere, and when the voltage is 6 volt then the current is 3 ampere. So each time when we are increasing the voltage, current is also increasing. So this is the observation that voltmeter and ammeter reading increases as the number of cells increases. And second observation is that if we calculate V upon I in each case, that is V upon I in this case, so 6 divided by 3, answer comes out to be 2. 4 divided by 2 comes out to be 2. 2 divided by 1 comes out to be 2. We can say V upon I is same in each case. 2 divided by 1 comes out to be 2. Is same in each case, meaning
V upon I is same in each case, meaning it is a constant. And third, if we plot a VI graph, meaning the graph between the potential difference and the ampere, we can say current we take on this x-axis and potential difference on the y-axis, ठीक है, and we plot the graph, then we get a straight line. So this is the third observation, that we get a straight line which is passing through the origin. ठीक है, तो जब आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, लिखना है, then you have to write these three observation. Voltmeter and ammeter reading increases, number of cells increases, V upon I is same in each case, and third, when we plot the graph we get a straight line. Now what we concluded from these observation, now we will discuss this. So from the first observation we get V upon I is equal to a constant which is equal to a resistance of a nichrome wire, V upon I is equal to R. And from the second observation we get the straight line nature of graph shows that current is directly proportional to, इसी point को अगर हम बोलें, current is directly proportional to the potential difference, ठीक है, V is directly proportional to the potential difference और I is directly proportional to the potential difference, ठीक है. थर्ड इज द पॉइंट, अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप निकालते हैं फॉर एग्जांपल x2 माइनस x1 v2 माइनस v1, ठीक है, करंट हम यहाँ से हाइयर से लोअर को माइनस करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वोल्टेज को लोअर वोल्टेज से माइनस करेंगे, ठीक है. सो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो होगी डेल्टा v अपॉन डेल्टा आई. डेल्टा v यहाँ पे क्या हुआ, v2 माइनस v1, मीनिंग 6 माइनस 4, आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, 6 माइनस 2 भी ले सकते हो, 4 माइनस 2 भी ले सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी लोगे आंसर सेम ही आएगा. एंड करंट इज कॉरस्पॉन्डिंग 6 का करंट कितना है 3, कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज 3 माइनस 2 1, ठीक है, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 2 1, तो स्लोप इज कम्स आउट टू बी सेम एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस R, ठीक है. So the slope of VI graph gives the value of resistance of nichrome wire at the given temperature, which is the same calculated value. This activity verifies the Ohm's law. तो in general हम end में बोल सकते हैं V is directly proportional to I, where I on constant open करने पे V is equal to RI and R is known as the resistance of the circuit. सो आज जो भी पूरी एक्टिविटी हमने डिस्कस की है, दिस वन इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन इन विच यू हैव टू फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, देन विच स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है, ठीक है. एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. देन बाय एन एक्टिविटी वी कैन प्रूव दैट. सेकेंड टाइम इसमें ग्राफ पूछा जाता है, देन यू हैव टू प्लॉट दिस ग्राफ, और ग्राफ की तीनों ऑब्जर्वेशन लिखनी है आपने.